Assalamu alaikum, everyone. I hope you guys are all doing well. In this video, I'm going to quickly go over all the important formulas and some of the major concepts that you need to know for your O-level maths paper 2. Now, before I begin, let me just remind you that you can also find in the description some of my other videos on topical past papers done on major topics that you have in paper 2, and also you can find solved yearly past papers from 2016 to 2021. The link for that is also in the description. Now let's begin right away. So first of all, there are some conversions that you need to be aware of: length, mass, volume, or time. Kilometers conversion meters के अंदर, meter to centimeter, centimeters to millimeter, and so on. You need to know about these. For mass in particular, this is one common one that a lot of people tend to forget. 1 ton equals 1,000 kilograms. You need to remember this. Volume ke andar, you need to remember 1 meter cube equals 1,000 liters, and 1 liter equals 1,000 centimeter cube. So these are some important ones that you tend to forget sometimes. The others are common, like time. 1 day equals 24 hours, 1 hour equals 60 minutes, and so on. So you can have a look at them. Percentages, may, if you have to calculate x% of a, how do you do that? You say x over 100 multiplied by a. So that's pretty straightforward. But if you have to increase something by a certain percentage, let's say you want to increase this number a by 8%, what would you do for that? You'll say a plus 8% of a. That's one way of doing this. A plus 8% of a, that's 8 over 100 times a. That's one way of doing this. Another way of thinking about this is apne 100% ke andar kitna add karna hai? 8%. So that basically is 108%, which is 1.08 in decimals. तो आप क्या कर सकते हो? उस number a को simply multiply कर सकते हो 1.08 के साथ. So it becomes 1.08a. So that's a quicker way of doing this. 8% से increase करना है आपने, तो you just multiply that number by 1.08. Similarly, if you want to decrease something by, let's say, 15%, how would you do that? One way to do that is you have this original number, that is a, you subtract from that 15% of a, and that works fine. Another way of thinking about that is 100% में से हमने 15% minus करना है, that leaves you with 85%, which is 0.85 in decimals. So you can just multiply that number by 0.85. So that's 0.85 multiplied by a. Okay, next, how do you calculate profit or loss percentage? So this is what you're going to do for that. Selling price minus cost divided by cost into 100%. Denominator में हमेशा यहाँ पे cost होता है, और आप ऊपर numerator में selling price में से cost minus करते हो. If this number turns out to be positive, that means it's a profit. If it turns out to be negative, that means it's a loss. अगर उसने loss पूछा होगा, बस आपको negative sign वहाँ से omit कर दोगे और आप सिर्फ number लिख दोगे. अच्छा, interest. So there are two types of interest that you have to deal with. Simple interest. How do you calculate that? That's PRT over 100. That's the formula that we've got for interest. Isme I stands for the interest amount. P is the principal amount that you're investing at the start. R is the rate of interest per annum, per year, जो decimals में लिखा होगा. Divided by 100 basically हम इसलिए कर रहे होते हैं because वो rate percent के अंदर होता है, तो हम percentage के अंदर होता है, तो वो percent का मतलब है per 100, तो वो rate over 100 basically already यहाँ पे incorporate हुआ है, and then you multiply by time. Time जो है वो भी year में होना चाहिए. So that's the formula that you use for simple interest. If you want the final amount after a few years, how do you calculate that? जो भी आपके पास original amount है, उसमें वो interest वाली amount add कर दो. You get the total amount. यहाँ पे A से मैंने represent किया हुआ final amount को. So the final amount would just be the initial invested amount, that's the principal, plus the interest. Or in other words, that will be P plus PRT over 100, PRT over 100 आपका interest था, इन दोनों को add कर दिया. अच्छा, then you have compound interest. Compound interest का हमारे पास ये formula होता है. Now, it's very important note here. इस formula के अंदर जो आपको amount मिलती है, that's not interest. That is the final amount after you have accrued that interest. So basically, a principal और interest को add करके total amount आपको मिलती है इस formula के अंदर. So compound interest वाले formula के अंदर आपको जो result मिलता है, that is the final amount. This is how this formula works. P into 1 plus R over 100 whole raised to power T. Again, the symbols represent the same thing as before. आपने ये formula use करना है to find the final amount. अगर आपको interest calculate करना है सिर्फ, तो आप क्या करोगे? उस final amount में से
initial जो invested amount है वो minus कर दोगे, that is going to give you the interest amount. Okay. Acha. Then you've got distance and speed, time calculations. Distance equals speed into time. इसी अगर आप rearrange कर लो, speed equals distance over time and time equals distance over speed. कभी कभी वो average speed पूछता है आपसे, तो average speed क्या होती है? Whatever is the total distance traveled divided by the total time taken. अच्छा, इसमें units कभी आपको देखना होता है, कभी कभी आपको kilometers per hours में आ रहा होता है. You have to convert that to meters per second. How do you do that? You multiply that by 1000 to convert kilometers to meters and divide by 3600 to convert hours to seconds. तो ये basically आप इस fraction से multiply कर रहे होते हैं 1000 over 3600, or a direct way of doing that is, if you want to convert kilometers per hour to meters per second, you can just divide the number by 3.6. Similarly, if you want to go the other way around, अगर आपने meters per second से kilometers per hour पे जाना है, you multiply by 3600 and divide by 1000, or in other words, you just multiply by 3.6. So meter per second से kilometers per hour पे convert करने के लिए 3.6 से multiply कर सकते हैं. Quadratic equations कैसे solve करते हैं? There are three methods of doing that. Factorization, midterm breaking आप वो कर सकते हैं, complete square कर सकते हैं. Quadratic formula is the third option. उसका formula हम यहाँ पे देख लेते हैं. ये formula आपको पता होना चाहिए, minus b plus minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. For that the equation has to be in this form. फिर एक side पे 0 और दूसरी side पे बाकी सारी terms हैं. Okay. Algebraic identities, we need to know these three identities: a plus b whole square, a minus b whole square, a square minus b square. ये तीनों identities पता होनी चाहिए आपको. Variation, directly proportional, inversely proportional. If something is if y is directly proportional to x, you can write it like this: y equals kx. If y is inversely proportional to x, you can write it like that: y equals k over x. Okay. Acha. Upper bound and lower bound. Let's take some examples of that. Upper bound is basically the maximum amount of something. Lower bound is the minimum possible amount of something. So अगर उसने का बताया हुआ आपको कि quantity है x, which is 11 centimeters correct to the nearest centimeters. Now it's nearest centimeter, that means nearest 1 centimeter. What you have to do is you have to divide this number by 2. 1 over 2. That gives you 0.5. तो आपने 0.5 क्या करना है? एक दफा इस नंबर में ऐड कर देना, एक दफा subtract कर देना. So basically 11 plus minus 0.5, that is going to give you the range of this number. So 11 centimeter जो है कहाँ पे हो सकता है? This can be, since it's to the nearest 1 centimeter, इसकी जो actual value है, that can be between 10.5 and 11.5. So 10.5 is going to be the lower bound and 11.5 is going to be the upper bound for this. Yes, lower bound or upper bound hogi. Similarly, take another example. Let's say you got number y, and that is given to be 25.7 correct to the nearest 0.1 centimeters. जो भी आपके पास यहाँ पे number है 0.1, इसको divide by 2 कर दिया. Once you divide that by 2, you get 0.05. आपने 0.05 उसमें plus or minus करना है 25.7 के अंदर. You get two numbers from that. The lower number is going to be the lower bound. The higher number is going to be the upper bound. ठीक है? अच्छा. अब क्या होता है कि आपको इन numbers को use करके किसी और quantity की lower bound या upper bound निकालनी होती है. उसमें there are generally 4 possible cases. You may either have to add the two numbers, x plus y, subtract, or multiply, or divide. Right? So mostly this covers most of the cases. जब add करना होगा और आपको maximum amount चाहिए, upper bound चाहिए, तो आप क्या करोगे? Maximum amount के लिए, you take the maximum values for both of them. For minimum amount, you take the minimum values for both of them. So that's pretty straightforward. Similarly, for multiplication में भी हम maximum amount के लिए क्या करते हैं? दोनों की maximum amount ले लेते हैं. Minimum amount के लिए क्या करते हैं? दोनों के minimum amount ले लेते हैं. But for subtraction, when you got x minus y, what is going to give you the maximum value of x minus y? Basically, आपको x की maximum value लेनी पड़ेगी और y की minimum value लेनी पड़ेगी. That is going to give you the maximum number x minus y. If you want the minimum possible number x minus y, उसमें आपको x की minimum value लेनी पड़ेगी और y की maximum value लेनी पड़ेगी. That's going to give you the overall minimum number, right? And that makes logical sense as well. Similarly for division, अगर आपको maximum value चाहिए, numerator maximum होएगा और numerator और denominator minimum होएगा. अगर आपको x over y की minimum value चाहिए, तो numerator minimum होगा और denominator maximum होगा. ठीक है? So you've got to keep these things in mind. Now, the assumption in all of these is that x and y are positive. अगर x और y में से कोई negative हो जाए, तो ये आखिरी दो cases जो है, इनमें थोड़ी सी complication आ जाती है और but that's not our scope right now.
ये आपको बताना चाहिए, ठीक है। अच्छा, next we've got mensuration. You need to know about all of these different formulas. Rectangle का area perimeter, square का area perimeter, parallelogram का area जो है that is base into height. That basically comes from two triangles. अब उसको triangles में भी divide कर सकते हो और उसको फिर 2 से multiply कर दो. So that's the area of a parallelogram. Perimeter में आप सिर्फ sum कर देते हो सारी sides को. Area का एक और formula भी है जो ट्राइंगल का दूसरे फॉर्मूला से आता है, हाफ AB sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2. सो दोनों पैरेललोग्राम की एरिया के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर ट्राइंगल्स का निकाल लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो. ट्राइंगल के एरिया के आपके पास दो फॉर्मूलाज डेफिनेटली आपको आने चाहिए. हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. रिमेंबर हाइट हियर इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द बेस. जो भी आप बेस ले रहे हो उसके परपेंडिकुलर आपकी हाइट होनी चाहिए. That's one formula that you can use. Another formula that you can use uses half AB sin C. इसके अंदर जो भी आप दो sides ले रहे हो A और B, जो angle C है that should be the angle that is the angle between those two sides. उन दोनों sides के दरम्यान वाला angle आप यहाँ पे use करोगे. Perimeter again you can just sum those sides. Trapezium का area क्या होता है, half into sum of parallel sides into height. Perimeter again sum of all sides. Circle का area, semicircle का area, sector का area क्या होता है, this is pi r square into theta over 360 degrees. ये आपको सब पता होने चाहिए. Circumference of a circle, that's also the perimeter of a circle. Be careful about the perimeter of a semicircle. Semicircle में क्या है, एक arc length है. Arc length क्या हो जाएगी, 2 pi r का half. That's going to be pi r. लेकिन अगर आपको इसका perimeter चाहिए तो आपको ये diameter भी चाहिए होगा, which is going to be 2 times r. वो आपको इसमें add करना पड़ेगा, ठीक है. Similarly, what about the perimeter of a sector? Arc length का formula हमारे पास क्या होता है, arc length का formula होता है 2 pi r into theta over 360. But if you want the perimeter, you'll have to add this radius and also this radius to that. So 2 pi r into theta over 360 plus 2r, that is going to give you the perimeter for this. अच्छा, next we've got 3-dimensional shapes. Cube का volume और surface area ये पता होना चाहिए आपको. Volume is just length raised to power 3. Surface area आप एक side का find कर लें, उसको 6 से multiply कर दें, because it's the cube, all surfaces are the same. Cuboid, length into width into height, that is going to give you the volume. Surface area, again, calculate the areas of the surfaces. The external surfaces, 6 surfaces हैं, opposite surfaces के areas equal होंगे, उनको आप find कर लें, उनको 2 से multiply कर दें, and that's going to give you the surface area for the cuboid. Cylinder का volume क्या होता है, it's pi r square h. What about the surface area? Curved surface area, जो इसका ये side वाला portion होता है, this portion, the curved surface area is given by 2 pi r h. ये आपको आना चाहिए, आपको याद होना चाहिए. And then what about the total surface area? Total surface के अंदर आपके पास ये दो circles भी आ रहे हैं, एक side पे circle है, एक दूसरी side पे circle है, उन circles के areas को आपको add करना पड़ेगा. So that gives you 2 pi r square. Sometimes the cylinder is open, यानी कि एक circle आप नहीं consider करोगे. That's going to give you 2 pi rh plus pi r square. उसको 2 से नहीं multiply करेंगे अगर आपका open cylinder है, यानी कि एक side पे circle नहीं है, सिर्फ एक side वाला circle आपने count करना. अच्छा, next we've got prism. How do you calculate volume of a prism? Volume of a prism is just given by base area into height. Base क्या होती है, जो आपका cross section होता है prism का. That's the shape that is basically on both ends of the prism. So for example, if it's a triangular prism, ये आपके पास एक साइड है, एक ट्रायंगल है, उसी तरह आपके पास इसके ऑपोजिट साइड पे जो आपको ग्रीन नजर आ रही है, दैट इज द अदर ट्रायंगल. इन दोनों के एरियाज they're basically base. इसका एरिया निकाल लेना आपने एक ट्रायंगल का, उसको मल्टीप्लाई कर देना हाइट के साथ. हाइट क्या होती है, हाइट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द क्रॉस सेक्शन. तो एक क्रॉस सेक्शन आपका इस फिगर के अंदर ये आ रहा है नीचे, एक क्रॉस सेक्शन ऊपर आ रहा है, इन दोनों के दरम्यान में जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द हाइट. ठीक है, इट डजंट मैटर कि ये वर्टिकल होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, बस जो क्रॉस सेक्शन के दो एंड्स हैं उनके दरम्यान में जो डिस्टेंस है दैट इज द हाइट. ठीक है. व्हाट अबाउट द सरफेस एरिया? सरफेस एरिया इज so there are two ways of thinking about this. You can either calculate the areas of all the faces separately, unko add kar le. There's a quicker way of doing this, and that is
जो आपकी बेस है, बेस का पेरीमीटर निकाल लें, प्रिज्म के केस में बेस का पेरीमीटर निकाल लें, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, वो आपके पास सारे साइड्स वाले फेसेस का एरिया आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस you'll get the area of this rectangle and also the rectangle at the bottom. इन तीनों के एरियाज आपको इससे मिल जाएंगे डायरेक्टली, किससे? पेरीमीटर ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट करने से. एंड देन ये जो ट्राइंगल्स हैं आपके पास ऑपोजिट एंड पे, इनके एरियाज को आप उसमें ऐड कर दोगे, दैट्स गोइंग टू गिव यू द टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म. प्रिज्म की बहुत सारी डिफरेंट आपके पास possibilities हो सकती हैं. You can have pentagonal prism जहाँ पे cross section pentagon है. So you can see that the yellow faces here. This is the cross section. You can have a hexagonal prism जहाँ पे आपका cross section hexagon है. So there are many different possibilities. ये formulas आपके same रहेंगे सबके अंदर. अच्छा, next we've got sphere. Sphere का formula आपको given भी होता है from जो आपका question होएगा. But you should still know that volume is given by 4/3πr³. Surface area is given by 4πr². But if we have that, it becomes a hemisphere. Hemisphere का volume तो बस आपने इसी को 2 से divide कर दिया, 2 से divide कर देंगे, you'll get 2/3πr³. But what about the surface area? इसका जो curved surface area है, वो तो आपके पास directly आ जाएगा 4πr² divided by 2 करके. But when you break this sphere into half, होता क्या है, आपके पास ये blue face भी आ जाता है. That's a circle. उस सर्कल के एरिया को आपको ऐड करना पड़ेगा इफ यू वांट द टोटल सरफेस एरिया. अगर आपको टोटल सरफेस एरिया चाहिए इस हेमिस्फीयर का, एक तो कर्व सरफेस एरिया हो गया, दैट इज 2πr², उसमें आपको πr² ऐड करना पड़ेगा, एंड दैट्स गोइंग टू गिव यू 3πr². द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर इज एक्चुअली 3πr². ओके, नेक्स्ट वी गॉट अ कोन. कोन का जो वॉल्यूम होता है दैट इज 1/3πr²h, एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन is given by πrl. L is the slant height of the cone. ये आपको पता होना चाहिए. इसमें अक्सर आपको पाइथागोरस भी यूज करना पड़ता है with this height and the radius, so keep that in mind. Total surface area कैसे होएगा? πrl, the curved surface area, plus the circle का area, जो नीचे आपके पास circle है उसका area, that's going to give the total surface area, πrl plus πr². Then you've got pyramid. Pyramid का volume का formula is very very similar. 1/3 into base area, जो भी आपकी base है उसका area multiplied by height, that is the volume of a pyramid. Surface area, जो भी आपका base का area, so basically all faces जो हैं, उन सब जो faces हैं उनके areas को आपने add कर देना होता है. एक आपकी base है और बाकी आपके triangles होंगे sides के ऊपर, उन सारी triangles के areas को add कर देना. ठीक है, that's going to give you the total surface area of a pyramid. इसमें जो height remember use करेंगे volume के अंदर, वो perpendicular height होगी from the base to the third end. This is going to be vertical height. Okay. Acha. Now you can have a look at the other possible pyramids. For example, you can have different kinds of base here. Hexagon भी हो सकती है, square भी हो सकती है, rectangle भी हो सकती है. You can have any base, लेकिन जो sides होंगी वो हमेशा triangles ही होंगी. ठीक है. अच्छा. Next, you need to know about some common angles properties. Angle on a straight line, they're always equal to 180. तो आपके पास यहाँ पे right पे जो figure नजर आ रही है x, y, z, they all add up to 180. Angles at a point, point के ऊपर जितने भी angles होते हैं, they all add up to 360 degrees. Vertically opposite angles, if there are two straight lines, दोनों जो opposite angles होते हैं वो equal होते हैं. Alternate angles, if you've got two parallel lines, so these lines are parallel, and you've got another line passing through that. These angles are equal. This angle and this angle, they're equal, and this angle and this angle, they are equal. ये आपको पता होना चाहिए. Corresponding angles then, again, you've got two parallel sides, two parallel lines, and you've got another line passing through them. These angles, y and this y, and this x and this x, they are corresponding angles. You've got to know about this as well. So next we've got polygons. Polygons के आपको interior और exterior angles का पता होना चाहिए. So interior angle, so this is an example. This is a pentagon, which is one specific polygon. ये जो अंदर वाले angles होते हैं इनको हम कहते हैं interior angles. The angles outside, अगर आप किसी भी line को extend कर दो, for example, I've extended this line here. ये line में extend कर दी बाहर की तरफ. ये जो बाहर वाला angle होता है इसको हम कहते हैं exterior angle. So for any polygon, you have interior angles and you've got exterior angles. जो exterior angles होते हैं ना,
हर पॉलीगॉन के उन सब का सम हमेशा 360 ही होता है. That does not change. That's always 360. जो interior angles होते हैं ये सब, they depend on the number of sides that you've got. अगर number of sides को हम n से represent कर दें, sum of all interior angles is given by n minus 2 into 180. Okay, that's the formula that you've got for the sum of all angles of a polygon, all interior angles of a polygon. अच्छा, अगर ये regular polygon है, regular polygon क्या होता है? That has equal sides, जिसकी sides सारी equal है और सारे angles भी equal हैं, of course. For that reason, उसमें आप क्या कर सकते हो? हर individual angle भी find कर सकते हो because all angles are equal. आपको sum पता है, exterior angles total का sum कितना था? 360. अगर एक exterior angle find करना होगा for a regular polygon, आप क्या करोगे? उसको divide कर दोगे n के साथ. ठीक है? That's 360 over n. Similarly, for each interior angle of a regular polygon, again, this is very important. We're talking about only regular polygons. Regular polygon के अंदर आप एक angle किस तरह find कर सकते हैं? आपको sum पता है. Sum is n minus 2 into 180. Then you divide that by n, and that's going to give you every single angle in that, every single interior angle in that polygon. Okay, so you've got this formula. Congruent triangles क्या होती हैं? Which have the same lengths, उनकी lengths सारी equal होती हैं और उनके जो angles होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ, मतलब एक triangle है दूसरा triangle, दोनों के angles आपस में सारे equal होते हैं. आप कैसे prove करते हैं? Got these three properties, side या तीनों sides को equal prove कर दें, side angle side, दो sides और उनके दरमियान वाले angle को equal prove कर दें, angle side, दो angle और एक side को equal prove कर दें, और right angle hypotenuse and a side की एक angle को prove कर दें कि right angle है, hypotenuse को equal prove कर दें और किसी भी और एक side को equal prove कर दें. These are four possible ways of proving that two triangles are congruent. अच्छा, similar triangles क्या होती हैं? In which all angles are equal. उनके corresponding angles equal होते हैं, लेकिन उनकी जो लेंथ्स हैं they are not necessarily equal नहीं होती, लेकिन उनकी जो रेशो होती है, ratio of corresponding sides, that is equal. अच्छा, एक तो angles equal हैं सारे. For example, if you've got two triangles ABC and PQR, their corresponding angles are equal. उसके साथ साथ ratio of corresponding side, यानी कि AB over PQ, BC over QR, and AC over PR, they are all going to be equal to each other. अच्छा, अब जब आपके पास इस तरह से कुछ similar triangles होते हैं, for example, in this case, ADE and ABC, these are similar triangles. इनके areas की जो ratio होती है, वो lengths की ratio का square हो जाती है, right? So this is the formula that we got for that. A1 over A2 equals L1 over L2 का whole square. You should know about this. There's another case that often comes along with, questions like these, जिसमें असल में वो triangle similar नहीं होती. So if you look at this, A, B, C, D, this figure that you see here, इसमें कोई similar triangles नहीं है, okay? लेकिन इसमें एक और property use हो रही है, वो क्या हो रही है? कि ये जो triangles मैंने यहाँ पे बनाई हुई हैं, उनकी height common है. जब आपके पास common height होती है, यहाँ पे आपने ये वाला formula नहीं लगा देना, ये relation नहीं लगा देना, because that does not work here. When some triangles have a common height, तो उसमें क्या होता है? Ratio of areas A1 over A2, that is basically equal to the ratio of their bases. तो अगर मैं triangle ABD और triangle ADC की बात कर रहा हूँ, इनकी जो ratio होगी, इनकी areas की जो ratio होगी, वो उनकी bases के ratio के equal होगी, यानी कि BD over DC, इसको square नहीं करेंगे, सिर्फ इनके simply bases के ratio के equal होंगे. So basically ये triangle की area से आ रहा होता है half base into height क्योंकि common है, half भी common है, ये दोनों cancel हो जाते हैं, सिर्फ bases रह जाती हैं, तो आपके पास areas की ratio जो है वो basis की ratio बन जाती है. अच्छा, for any similar object, now this could be in 3 dimension as well ना, अगर आपको पता है कि उसने बताया हुआ कि दो objects similar हैं, एक तो उनके लेंथ्स की, रेडियाई की, हाइट्स की, उन सब की रेशियोज इक्वल होंगी, ठीक है? अच्छा, अगर एरियाज की बात हो तो एरियाज की रेशियो अगेन उनकी लेंथ्स की रेशियो या फिर उनके रेडियाई की रेशियो या उनकी हाइट्स की रेशियो उनका स्क्वायर हुआ करेंगी. अगर वॉल्यूम की बात हो रही हो तो उसमें क्या होगा? वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम की जो रेशियो होगी वो उनकी लेंथ्स की रेशियो L1 over L2 या रेडियाई की रेशियो या हाइट्स की रेशियो उनका क्यूब हुआ करेगी, राइट? सो दीस आर 3 रिलेशनशिप दैट यू नीड टू नो फॉर एनी सिमिलर फिगर. जब इसने बताया कोई भी फिगर सिमिलर है, उसमें एरिया और वॉल्यूम्स के ये रिलेशनशिप्स होते हैं इस तरह से. अच्छा, नेक्स्ट यू नीड टू नो अबाउट सर्कल थ्योरम्स. ये आपको सारे पता होने चाहिए. ऑफ कोर्स इट्स द एक्सप्लेनेशन फॉर दीस इज pretty detailed, but you have to know these properties. And a line coming from the center of a circle to a chord,
that is cutting the chord at the midpoint always makes a 90 degrees with that chord. ये angle 90 होता है अगर वो midpoint पे cut करी है chord को. Radius और tangent का angle हमेशा 90 होता है आपस के अंदर. Diameter जो है वो हमेशा circumference के ऊपर 90 degrees का angle बनाता है. You should know about this. Angle at center, so if you've got a chord or an arc like this, ये arc को भी consider कर सकते हैं, chord भी consider कर सकते हैं. अगर chord के end point से एक angle circumference पे बन रहा है, एक angle center पे बन रहा है, angle at center is going to be 2 times the angle at the circumference. Okay, if you've got 2 tangents coming from a single point outside a circle, ये point C है, इससे 2 tangents आ रहे हैं, एक point B के ऊपर आ रहा है, एक point D के ऊपर आ रहा है. The lengths of those tangents are going to be equal. ये length और ये length equal है. ये basically आपकी kite shape बन जाती है. ABCD is going to be a kite. और ये lengths आपकी equal होंगी. CD is equal to CB. AB और AD तो वैसे radius हैं. अगर आप इनको दरम्यान में एक line draw कर दो इस तरह से, this line, तो ये angles को भी bisect करती हैं. So this angle here is equal to this angle, and this angle here is equal to this angle. ये आपको property पता होनी चाहिए. Then you've got a cyclic quadrilateral. If you've got a quadrilateral, which has its ends on which has vertices on the circumference of a circle, जो opposite angles होते हैं, उनका sum जो है वो 180 होता है. ठीक है, cyclic quadrilateral वाली property है. And then you've got another one. If you got an arc or a chord, the ends of the chord they make equal angles at the circumference. Circumference पे जितने भी angles बना रहे होंगे, if they're making one angle here, another angle here, they're all going to be equal. Okay, next you need to know some indices rules. A power m into a power n, that if the bases are same or the two numbers multiply और उनकी powers add हो जाती हैं. Again, if the bases are same and two numbers are being divided, their powers get subtracted. ये power अंदर है, ये बाहर है, इन दोनों को multiply करके इस तरह से लिख सकते हैं. Power negative है वो reciprocal बन जाता है. दो numbers multiply हो रहे हैं, उनकी whole power है, उस power को आप अलग अलग लिख सकते हो. इस तरह divide हो रहे हैं तब भी आप अलग अलग लिख सकते हो. Root जो होता है वो इस तरह नीचे आ जाता है. Anything raised to power 0 is always equal to 1. You need to know about all of these indices rules. Trigonometry में, if you have a right angle triangle, you can use these 3 ratios: sine, cos, and tan. Sine is equal to perpendicular hypotenuse, cos is base over hypotenuse, tan is perpendicular over base. Now, keep in mind, जो perpendicular और base होते हैं, वो जो angle आप consider कर रहे हो, उसके ऊपर depend करते हैं. So if you're considering this angle, इस angle के हिसाब से ये perpendicular है, ये base है. If you're considering this angle here, इस angle के हिसाब से this is perpendicular and this is the base. So the side that is adjacent to the angle, that is the base. The side that is opposite to the angle, that is perpendicular. Right angle triangles के अंदर आप ये ratios use कर सकते हो. You need to know about Pythagoras theorem. Hypotenuse square equals base square plus perpendicular square. If the triangle is not a right angle triangle, then you've got 2 options: sine rule or cosine rule. If you want to find any unknown side or unknown angle, तो आप इसमें क्या करते हो? Sine rule is given by this. If you've got a triangle ABC, उसकी sides और angles आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं right side के ऊपर. Sine rule basically looks like this: A over sine A equals B over sine B equals C over sine C. आप उसमें से कोई भी दो use कर सकते हैं. You can use these two, or you can use maybe this one and this one, depending on what the information that is given. When do you use this? You use this when you have one pair of angle and a side is given. For example, this angle. Sorry about that. Yeah, so for example, this angle and the opposite side, अगर आपको एक पेयर पता हो और बाकी में से कुछ एक information आपको और पता हो, for example, एक side उसने बताई हो, आप उसमें sine rule use कर सकते हैं. ठीक है? The other option is cosine rule. When sine rule does not work, this is the other option. ये हम generally कब use करते हैं? When you have 3 sides known और आपको कोई angle find करना है, that's one option. या फिर 2 sides पता है, उनके दरमियान वाला angle भी पता है और आपको कुछ और तीसरी side find करनी है, for instance, तब ये use कर सकते हैं. This is how it looks like: a square equals b square plus c square minus 2bc cos a. इसी के rearrangement, अगर आपको angle find करना हो, इसको rearrange करके ऐसे भी लिख सकते हैं. You should know, it's better to know both of these forms, but if you know just this one, that's also enough. Now you've got to be careful. ये जो side यहाँ पे left पे आ रही होती है, angle corresponds to that. जो हमारे पास जो angle आ रहा होता है ना, इस formula के अंदर, जो angle आता है formula के अंदर,
that corresponds to the side that is written on the left side of this equation. ठीक है, so ये आपने बस ध्यान रखना होता है, ये cosine rule आपको यूज करना आना चाहिए. Next we've got bearing. Bearing क्या होती है? Bearing is an angle that's measured clockwise from the north. जिस point से आपने find करना हो, for example, या आपने इसमें क्या याद रखना है? Clockwise हमेशा measure करना है और north vertical line बना के आपने उससे उस तरह measure किया करना है. So bearing of C from A, for instance, so from के बाद जो number आ रहा होता है उस पे आपके north बनता है. So from A, for instance, अगर आप A के ऊपर north बनाते हो, so A के ऊपर आपने vertical line बनाई इस तरह से. Bearing of C, तो आप क्लॉकवाइज जाके देखोगे सी पे जो लाइंस कुछ लाइन ज्वाइन कर रही है ए से, इस लाइन का एंगल क्या बनता है? दैट्स 50 डिग्रीज. यू राइट दैट टू बी 50 डिग्रीज. तो इसमें 3 डिजिट्स हम हमेशा लिखते हैं बिफोर द डेसिमल, दैट्स बेटर. सो 50 डिग्रीज को आप 050 लिख दोगे. ठीक है, सो इस तरह से यू कैन फाइंड बेयरिंग ऑफ a number of different points from other points here. You can see that on the screen here. You can try to just think about that. The same method basically works for all of them. ये आप सारे देख सकते हैं. Let's move on. 3D trigonometry, जो आपको 3-dimensional trigonometry आ जाती है. For example, they say something is vertical at a point. अपने एक चीज बस याद रखनी होती है इसके अंदर. That's very important. And that is कि जिस point के ऊपर आपका वो कोई भी चीज है, for example, we deal with towers a lot. एक point A के ऊपर कोई tower है, तो A के ऊपर जितने भी एंगल्स बन रहे होंगे पॉइंट T के साथ, A के ऊपर जितने एंगल्स बनेंगे T के साथ, वो सारी 90 डिग्रीज होंगे, बिकॉज AT is vertical and everything else here is horizontal, right? तो जो एंगल्स आपके बनेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के, वो हमेशा 90 होगा. अब इसमें अक्सर क्या आसान होता है कि आप अलग अलग ट्राइंगल्स बना लो. फॉर एग्जांपल, यू कैन मेक अ ट्राइंगल फ्रॉम दिस इन टू डायमेंशन जहाँ पे TA एक साइड पे आ रहा है. इसी तरह से इसकी जो C के साथ ट्राइंगल बनेगी उसमें भी A पे 90 बन रहा होगा. इसकी जो B के साथ ट्राइंगल बनेगी उसमें भी A के ऊपर 90 बन रहा होगा. राइट, इसको ब्रेक करके इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है. You need to keep that in mind. Angle of elevation or depression भी यहाँ पर होता है. You should know about that. If you are basically at this point A, angle of elevation of B from A, that's going to be this angle theta here. ठीक है, अगर A के ऊपर खड़े होकर आप B को देख रहे हो तो angle of elevation क्या होएगा? This angle theta. आपको कितना ऊपर देखना पड़ रहा है? This is the angle. Similarly, angle of depression of A from B. B के ऊपर खड़े होके आप नीचे देख रहे हो A की तरफ, आपको कितना नीचे देखना पड़ेगा? That's this angle here, right? So अगर तो इस तरह से horizontal planes ही हैं तो angle of elevation और depression अक्सर equal आते हैं, not always. कभी कभी वो plane थोड़ा सा inclined हो जाता है, उसमें it can be different, but mostly you'll see the angle of elevation and depression, they are going to be the same in this case. अच्छा, coordinate geometry के अंदर there are some formulas that you need to know about. Distance formula, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. If you've got 2 points, उनको आप x1 y1 label कर लें, दूसरे को x2 y2 label कर लें. Distance formula ये पता होना चाहिए. Midpoint formula, x1 plus x2 over 2, y1 plus y2 over 2. Gradient, y2 minus y1 over x2 minus x1. You need to know about this. If two lines are parallel, their gradients are going to be equal. If two lines are perpendicular, their gradients are negative reciprocals of each other. For example, अगर एक का gradient 5 है, दूसरे का क्या होगा? उसका negative sign change हो जाएगा और उसका reciprocal हो जाएगा. ठीक है, so keep that in mind. Equation of straight line कैसे find करते हैं? You can use y equals mx plus c for that. ये use कर सकते हैं. अगर आपको y-intercept पता हो तो this is always quicker, but if you do not know the y-intercept, if that's not known, if that's not given, this form, although it's optional, ये आपको जल्दी आंसर दे दे कि y minus y1 equals m into x minus x1. When you have a point given and the gradient, आपको y-intercept नहीं पता, so this is going to be quicker. But this is optional. You don't necessarily have to know this. If you're comfortable using this every time, that's okay. ये जरूरी नहीं है दूसरी form. Okay. अगर एक लाइन दी हो, उस लाइन को यूज करके आपने ग्रेडियंट फाइंड करना है, आप क्या करोगे? लाइन की इक्वेशन दी है, राइट? उसकी इक्वेशन पता है, उसका आपने ग्रेडियंट फाइंड करना है. क्या करोगे? उस लाइन को पहले, इक्वेशन को सबसे पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, y को सब्जेक्ट बना लेंगे. y को सब्जेक्ट बनाने के बाद x का जो भी कोएफिशिएंट होएगा, दैट इज गोइंग टू बी द ग्रेडियंट ऑफ दैट लाइन. ओके, अच्छा. Sometimes you have to find area of a triangle using its coordinates. आपको coordinates पता होते हैं,
मोस्टली जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या होगा, जो डायग्राम आ रही होगी ना उस पे एक ना एक साइड या तो हॉरिजॉन्टल होगी या वर्टिकल होगी। जब इस तरह का केस होगा, which is going to be 99% of cases, हमेशा तकरीबन इसी तरह हो रहा होगा, जो साइड हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है उसको आपने बेस ले लेना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है उसको आपने बेस ले लेना है, और फिर आपने उसका डिस्टेंस ले लेना है परपेंडिकुलर फ्रॉम द थर्ड साइड, फ्रॉम द थर्ड वर्टेक्स। ठीक है, उससे आपको हाइट मिल जाएगी, आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज कर लिया करोगे। दैट्स गोइंग टू वर्क इन 99% of the cases, but sometimes people find it difficult to use this way, or you know there's a possibility कि वो इस तरह से आपकी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लेंथ कोई भी ना आ रही हो। You've got another backup formula for that. ये अगर आपको पता है, you can use this. ये formula use कर सकते हैं, half into you write coordinates like this, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये तीनों आपके coordinates हैं उस triangle के। उनको आप इस तरह से लिख लेते हो, पहले तीन लिखते हो, उसके बाद फोर्थ दोबारा से रिपीट कर लेते हो, and then you multiply them like this. जो green arrows नजर आ रहे हैं इनको आप multiply करते हैं, x1 y2 plus x2 y3 plus x3 y1, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं जो ऑपोजिट आपके पास एरोज आ रहे हैं, x2 y1 x3 y2 x1 y3, इन तीनों को उनमें से माइनस कर देते हैं। You just evaluate everything, then एंड पे आप यहाँ पे साइड पे मॉडुलस लगा होता है। मॉडुलस का मतलब है अंदर जो भी नंबर आ रहा होगा, ये वर्टिकल लाइंस का मतलब है अंदर जो भी नंबर अगर नेगेटिव आ जाता है फॉर इंस्टेंस एंड के ऊपर, आपने उसको पॉजिटिव कर देना है, क्योंकि एरिया तो नेगेटिव हो नहीं सकता, आपने उसको पॉजिटिव कर देना। अगेन दिस इज ऑप्शनल, बट दिस सम पीपल डू फाइंड इट हेल्पफुल समटाइम्स। अच्छा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर यू शुड रिमेंबर ग्रेडियंट जो होता है वो स्पीड होती है। स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर आपका जो एरिया अंडर ग्राफ होता है वो डिस्टेंस होता है, और जो आपका ग्रेडियंट होता है वो एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सेट्स में यू नीड नो सम कॉमन नोटेशंस। सबसेट की नोटेशन आपको पता होनी चाहिए। इफ A is a subset of B, that means every element in A is also an element of B. प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि वो सबसेट है लेकिन बस इक्वल नहीं है, इक्वालिटी नहीं आ सकती, लेकिन सबसेट वो है। इंटरसेक्शन, दैट मीन्स A इंटरसेक्शन B मीन्स कि दोनों सेट्स के अंदर क्या क्या चीजें कॉमन है। यूनियन मीन्स कि आपने उनको कंबाइन कर दिया, उन सारे के एलिमेंट्स को आपने ऐड कर दिया एक दूसरे के अंदर, मतलब उनको कंबाइन कर दिया, मर्ज कर दिया। सो यू कैन से कंबाइन और यू कैन से मर्ज्ड, आपने उनको मर्ज कर दिया। बस रेपिटेशंस जो हैं आपने रेपिटेशंस कोई नहीं रखनी, उनको सिंगल टाइम कंसिडर करना है। कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स एलिमेंट्स दैट आर नॉट इन ए, ये सारी नोटेशन आपको पता होनी चाहिए। Loci के अंदर there are four common loci cases that you need to know about. Points at a given distance from a point O, fixed distance है. So there's this fixed distance from a point O, that's going to be a circle with that distance x as the radius and that point as the center of the circle. Points at a fixed distance from a line. Line से fixed distance कैसे रहता है आपका? You make parallel lines, एक लाइन ऊपर बन जाती है, उस लाइन की एक लाइन नीचे बन जाती है, उस डिस्टेंस के ऊपर parallel lines बन जाती हैं। Points equidistant from two points, दो points से equal distance कब होता है? You make perpendicular bisector of that, you take perpendicular bisector of those 2 points. That's going to give you the point, the locus of the points that satisfy this condition. Then finally, the fourth case is when you want points that are equidistant from two lines. दो lines से equidistant होने का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास ये एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे है, इन दोनों लाइन से equidistant आप कैसे हो सकते हो? When you have this angle bisector in the middle, where this angle here and this angle here, they're equal angle bisector बना लेते हैं। सबकी constructions आपको पता होने चाहिए। Compass और ruler को use करके when you're using that, make sure you do not remove your arcs there, because examiner को आपने proof देना होता है कि आपने construction उससे compass के साथ किया। अच्छा, next we got vectors. Vectors के अंदर you need to know how to add vectors. Mostly ये figures से कर रहे होते हैं। Figures में आपने path ढूंढना होता है। How do you go from one point to another point on the figure? ये आपको letters में भी पता होना चाहिए। AB plus BC that equals AC. Why? Because ये जो first vector है उसका ending point, next vector का starting point, they are the same. तो उसका जो result आता है that is AC. Similarly, अगर आप देखें ये अगर मैच करते जा रहे हैं लास्ट वेक्टर का एंडिंग पॉइंट और नेक्स्ट वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट, तो जो रिजल्ट आता है आपके पास दैट इज जस्ट गोइंग टू बी द फर्स्ट लेटर एंड द लास्ट लेटर। एडिशन इस तरह से होती है। सब्ट्रैक्शन के अंदर दिस वन केस दैट यू हैव टू नो अबाउट। फॉर एग्जांपल
ए बी वेक्टर अगर आपके पास है उसको आप पोजिशन वेक्टर्स की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, यू हैव टू नो अबाउट दिस। पोजिशन वेक्टर ऑफ द सेकंड लेटर माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ द फर्स्ट लेटर। सो सेकंड पॉइंट का पोजिशन वेक्टर माइनस फर्स्ट पॉइंट का पोजिशन वेक्टर, ये आपको पोजिशन वेक्टर्स की फॉर्म में लिखना आना चाहिए। सिमिलरली mn अगर आपके पास है फॉर एग्जांपल दैट्स on माइनस om। अच्छा, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का? x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, we add them and take square root of them, so that's how you calculate magnitude. How do you prove two vectors are parallel, or if two vectors are parallel, what does that mean? If you, let's take an example, let's say you've got a vector here, vector b here. अगर दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं उसका मतलब क्या होता है, इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं उनकी रेशियोज इक्वल होंगी। सो यू कैन से m और p की रेशियो m over p that should equal the ratio of n and q, n over q। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अब इसको ये भी कह सकते हैं कि m over n that's also going to be equal to p over q, दोनों तरह कह सकते हैं। This is also fine and this is also fine, so this holds true for parallel vectors। सिमिलरली एक और तरीका क्या होता है, आप ये प्रूव कर दें कि एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल है। दिस इज ऑफन ईजियर इफ यू नो अबाउट दिस, बट आप ये भी कर सकते हैं, यू कैन से a is k times the other vector and that also works। That's another way of using parallel vectors। Next we've got matrices। matrices में आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए matrices को, फिर आपको ये प्रोसेस पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस। You need to know how to calculate determinant a b c d, इस तरह से वेक्टर है, डिटरमिनेंट क्या होता है उसका a d माइनस b c। सो इस डायगोनल पे मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं, इस डायगोनल पे जो प्रोडक्ट आता है। अच्छा, एडजॉइंट के लिए यू बेसिकली इंटरचेंज दीज डायगोनल्स, और जो दूसरे यू इंटरचेंज द एलिमेंट्स ऑन दिस डायगोनल और दूसरे डायगोनल के एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इसको इन दोनों चीजों को यूज करके आपके पास इनवर्स आता है। इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1 over डिटरमिनेंट into adjoint of the matrix। अगर आपको matrix A का inverse निकालना है तो आप क्या करोगे, 1 over AD minus BC which is the determinant multiplied by the adjoint which is basically this diagonal's elements swapped and the other diagonal's elements they have their sign changed। Okay, अच्छा, अगर आपके पास कोई इक्वेशन आ रही है मैट्रिक्स के अंदर AB equals C, लेट्स से अगर आपने उसमें से B फाइंड करना है फॉर इंस्टेंस, आप क्या करोगे, प्री मल्टीप्लाई कर दोगे A इनवर्स को दोनों साइड्स के ऊपर, दोनों साइड से पहले आपने मल्टीप्लाई कर दिया A इनवर्स को, यू कैन फाइंड B यूजिंग दैट। अगर आपको A फाइंड करना था, आप उसको पोस्ट मल्टीप्लाई कर दोगे B इनवर्स के साथ, बाद में B इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे बिकॉज B बाद में आ रहा है, तो अब बाद में दोनों साइड्स पे B इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो and B and B inverse they are going to get cancelled, you're going to be left with A equals CB inverse। क्लास से आप ये फिगर आउट कर सकते हो। अच्छा, transformation there are 4 types of transformations that you need to know about। First of all we've got translation describe होती है using a column vector x y, ये आपके components होते हैं, इसमें आपको ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो जाता है एक और पोजीशन के ऊपर, यू नीड टू नो कि उसकी साइज शेप ओरिएंटेशन सब कुछ सेम रहता है ट्रांसलेशन के अंदर। दैट्स हाउ यू आइडेंटिफाई ट्रांसलेशंस के उसका साइज शेप और ओरिएंटेशन कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, बस वो उठा के एक और जगह पर रख दिया। रिफ्लेक्शन इज डिस्क्राइब्ड बाय अ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें आपको लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन लिखनी होती है। ट्रांसलेशन के अंदर आपको वेक्टर लिखना होता था, यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करने के लिए लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन लिखनी होगी हमेशा। हाउ डू यू आइडेंटिफाई if it's a reflection? So basically यहाँ पे object और image एक दूसरे के they are symmetrical about the line of reflection and their size and shape that also remains the same, although उसकी direction जो है वो change, orientation उसकी जो है वो change हो सकती है। अच्छा, और जो perpendicular distance होते हैं आपके corresponding points के from the line of reflection they are equal। ठीक है, अच्छा, इसको graphically करना is pretty straightforward। But if you have done it this way, कि coordinates किस तरह से change होते हैं, you can also remember it। ये आपके पास table है कि हर coordinate in हर reflection में आपके coordinates किस तरह से change हो रहे होंगे। x axis में reflection से क्या होगा, y axis में reflection से क्या होगा, y equals x line में reflection से क्या होगा, y equals minus x line में reflection क्या होगा। ये 4 cases में तो आप ये याद रख सकते हो if you want, although I don't recommend that। आप graphically कर लें and that works every time, but this is what you can remember for that if you want। रिफ्लेक्शन आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, साइज और शेप सेम रहती है, डायरेक्शन जो है वो चेंज हो सकती है। आपने क्या करना है आइडेंटिफाई करने के लिए,
कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना। ओके, आप जब ज्वाइन करेंगे, इफ इट गिव्स पैरेलल लाइंस दैट मींस इट्स अ रिफ्लेक्शन। कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, इफ यू गेट पैरेलल लाइंस दैट्स अ रिफ्लेक्शन। ओके, हाउ डू यू फाइंड द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन? आपने जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइन किया है उनके मिड पॉइंट्स ले लें, उनको आप ज्वाइन कर दें, दैट्स गोइंग टू गिव यू द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। रोटेशन कैसे डिस्क्राइब होती है? रोटेशन के डिस्क्राइब करने के लिए आपको ये तो लिखना पड़ेगा, रोटेशन है। Then you got to write down the angle along with whether that is clockwise or anti-clockwise. आपको लिखना पड़ेगा वहां पे clockwise या anti-clockwise है। And then you also have to write the center of rotation. ये तीनों चीजें आप लिखेंगे, then you get 4 marks. Center rotation बताना है, angle बताना है कि वो clockwise या anti-clockwise है, और आपने लिखना रोटेशन है। ठीक है, इसमें भी साइज और शेप सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते, लेकिन डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाती है। ओके, again the corresponding points of the object and the image, they have equal distances from the center of rotation। और फिर आपके पास कुछ कॉमन रोटेशंस हैं जिनका अगर आप याद रखना चाहें कि कोऑर्डिनेट्स किस तरह से चेंज होते हैं, यू कैन हैव अ लुक एट दिस हियर, कहाँ पे साइन चेंज होता है, कहाँ पे वो आपके कोऑर्डिनेट स्वैप होते हैं। अगेन यू कैन डू दिस ग्राफिकली एज वेल एंड दैट आल्सो वर्क्स। It's not necessary कि इन्हीं में से कोई रोटेशन होगी, sometimes they give you different angles as well, वो तो ग्राफिकली करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको 60 डिग्री रोटेट करना पड़े तो आपको ग्राफिकली ही करना आना चाहिए। हाउ डू यू आइडेंटिफाई अ रोटेशन? इसमें साइज और शेप तो सेम रहते हैं लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाती है, बट हाउ डू यू एग्जैक्टली आइडेंटिफाई दैट? रिफ्लेक्शन और रोटेशन में डिस्टिंग्विश करने का मसला होता है मोस्टली। आप क्या करोगे, इसके अंदर भी कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे, यहाँ पे पैरेलल लाइंस नहीं आएंगी। तो कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे अगर आपकी पैरेलल लाइंस आ जाती हैं, दैट इज गोइंग टू बी अ रिफ्लेक्शन। अगर पैरेलल लाइंस नहीं आती, दैट इज गोइंग टू बी अ रोटेशन। ठीक है, ऑफ कोर्स अज्यूमिंग कि आपने ट्रांसलेशन तो ऑलरेडी आपने चेक कर लिया कि वो नहीं है। ओके, अच्छा, हाउ डू यू फाइंड द सेंटर रोटेशन? सेंटर रोटेशन फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाते हैं जो आपके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज के। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लें, उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लें, जहां पे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी द सेंटर ऑफ रोटेशन। ओके, अच्छा, एक और तरीका क्या होता है, जब तो आपकी कोई कॉमन रोटेशन है इस तरह की 90 डिग्रीज, 270 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, तो आपको जो पॉइंट होगा ना वो हमेशा मोस्टली क्या होएगा, वो कोई इंटीजर कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो आप उनमें से आप वो पॉइंट गेस कर सकते हैं, 3-4 पॉइंट्स आप देखें, अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, उनके डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर लें। अगर वो डिस्टेंसेस किसी पॉइंट के इक्वल आ जाते हैं सारे कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के साथ, यू कैन जस्ट डू इट डायरेक्टली लाइक दैट। ओके, बट दैट वर्क्स समटाइम्स that requires a lot of thinking, वो नहीं होता। So this is the standard method that you have in those cases। अच्छा, how do you find angle of rotation? Angle of rotation आपने क्या करना है, कोई भी corresponding points आपने join कर देने हैं ऑब्जेक्ट और इमेज के, और फिर आपने उससे एंगल ऑब्जर्व कर लेना है, उसके एंगल क्या आ रहा है और डायरेक्शन क्या आ रहा है। कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को आपने सेंटर रोटेशन से ज्वाइन करना है। ठीक है, और इससे आप एंगल रोटेशन मेजर कर लो, ऑब्जर्व कर लोगे। I've got a detailed video on transformations as well. You can find the description of that. You can find the link to that in the description below. वो आप देख सकते हैं, उसमें थोड़ा ये चीजें थोड़ी ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन की हुई हैं if you're confused about anything in particular। अच्छा, नेक्स्ट we've got enlargement। enlargement में क्या होता है? enlargement is pretty easy to spot because यहाँ पे साइज जो है वो चेंज हो जाता है। ओके, शेप आपकी सेम रहती है, it remains a similar figure, बट ओवरऑल शेप जो है वो चेंज नहीं होती, उसका साइज सिर्फ चेंज होता है। ये डिस्क्राइब कैसे करते हैं? सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट ये बताना जरूरी होता है, और आपको स्केल फैक्टर बताना होता है। दो चीजें बतानी जरूरी होती हैं। हाउ डू यू फाइंड द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट? यू जस्ट जॉइन कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, जहां पे वो मीट करते हैं, जहां पे वो इंटरसेक्ट करते हैं, that's going to be the point, that's going to be the center of enlargement। how do you find the scale factor? स्केल फैक्टर फाइंड करने के लिए आप सिंपली क्या करोगे, आप कोरेस्पॉन्डिंग जो लेंथ होंगी आपकी ऑब्जेक्ट की और इमेज की, उनको डिवाइड कर देंगे, आपका स्केल फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, सो इमेज की लेंथ डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की लेंथ, दैट्स गोइंग टू गिव यू द स्केल फैक्टर। ठीक है, अच्छा, अगर आपका के पॉजिटिव है, स्केल फैक्टर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये होगा कि ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड पे है सेंटर के। अगर आपका स्केल फैक्टर नेगेटिव आ जाता है, अगर स्केल फैक्टर नेगेटिव है, उसने बताया हुआ कि नेगेटिव है, तो आपके ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होंगे, वो
सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट के ऑपोजिट साइड्स पे होंगे। तो एक फॉर एग्जांपल अगर आपकी डायग्राम इस साइड के ऊपर है, दूसरी बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड पे होगी, ठीक है, दैट्स गोइंग टू बी अ नेगेटिव स्केल फैक्टर। और आपकी फिगर भी इन्वर्ट हो जाती है। इनफैक्ट तो अगर आपकी ये यहाँ पे इस तरह से था तो दूसरी फिगर आपकी इन्वर्ट होके इस तरह से आ जाएगी, राइट। सो फिगर भी आपकी इन्वर्ट हो जाती है। कीप दैट इन माइंड, नेगेटिव स्केल फैक्टर के अंदर your figure is going to be on the other side. If k is between -1 and 1, फिगर का साइज छोटा हो जाता है, ठीक है। If k is less than -1 और greater than 1, यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है, तो फिगर का साइज बड़ा हो जाता है, वो enlarge हो जाती है। अच्छा, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशंस, you can actually find all of these matrices using this set of points 1 0 0 1, इनको यूज करके आप सारी ये matrices फाइंड कर सकते हैं। ये आपको याद नहीं करने चाहिए क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी कि आप उसको मिक्सअप कर दोगे। तो आपको ये प्रोसेस आना चाहिए कि 1 0 0 1 ये पॉइंट्स लेके आप ये कॉमन मेट्रिसेस किस तरह निकाल सकते हैं। सारे मेट्रिसेस आपको पता होने चाहिए या आपको फिगर आउट करने आने चाहिए। रिफ्लेक्शन in x-axis, y-axis, y equals x and y equals minus x, rotation with center origin, and rotation of 90 degrees clockwise, anti-clockwise, and 180 degrees, इन तीनों के मेट्रिक्स आपको पता होने चाहिए। और आपको enlargement with center origin, इसका मेट्रिक्स पता होना चाहिए, that's k00k। या आप वो पॉइंट लेके भी आप फिगर आउट कर सकते हैं। You don't necessarily have to memorize all of them। अच्छा, अगर आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, दो ट्रांसफॉर्मेशन कंबाइन हो रही हैं, इफ यू गॉट rx ry being applied on a point a, let's say, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन उस पॉइंट के साथ ज्यादा क्लोज है वो पहले अप्लाई करेंगे। तो ry is closer to a, that's going to be applied first, ry पहले अप्लाई होगी और rx जो है उसके बाद अप्लाई होगी। इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस, this is sometimes asked about as well। अगर आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसलेशन ए बी, उसका इनवर्स क्या होगा, तो उसको ऑपोजिट, उसका बेसिकली ऑपोजिट करते हैं। तो ट्रांसलेशन ए बी का इनवर्स क्या होएगा, ट्रांसलेशन माइनस ए माइनस बी, जो आपको ओरिजिनल शेप पे वापस ले आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ट्रांसफॉर्मेशन ए से बी पे मैप करती है, इनवर्स क्या करेगी, वापस बी को ए पे मैप कर देगी। सो इफ इट इज अ ट्रांसलेशन ए बी, उसका इनवर्स क्या होगा, माइनस ए माइनस बी ट्रांसलेशन। रिफ्लेक्शन कोई भी होगी तो सेम रिफ्लेक्शन आप दोबारा कर देंगे तो आप वापस आ जाएंगे। 180 डिग्रीज रोटेशन का इनवर्स भी 180 डिग्रीज रोटेशन होएगा। 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज रोटेशन का इनवर्स 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का इनवर्स 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज। एनलार्जमेंट विद स्केल फैक्टर k का इनवर्स enlargement with scale factor reciprocal of that 1/k। जो भी आपका ओरिजिनल स्केल फैक्टर था उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, that's going to give you the inverse of that transformation। Next, you've got statistical diagrams and measures। For example, mean कैसे calculate करते हैं, ungrouped data में आप simply क्या करते हो, sum of all values divided by the number of values। In group data, you use this formula sigma fx over sigma f। आप क्या करते हो, टेबल के अंदर एक रो या एक कॉलम ऐड कर लेते हो fx का, उन सबको ऐड कर लेते हो और फिर डिवाइड इस फॉर्मूला को यूज कर लेते हो। मीडियन कैसे निकालते हैं, यू गॉट दिस फॉर्मूला फॉर दैट। अगर आपके पास इस तरह से डेटा है, n+1/2th वैल्यू, दैट्स गोइंग टू बी द मीडियन। n+1/2 आपका मीडियन नहीं है, इस पोजीशन के ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो आपका मीडियन होएगा। अगर तो इंटीजर आ जाता है तो उसी पोजीशन के ऊपर आप जाके देख लेंगे क्या वैल्यू है। अगर ये इंटीजर नहीं आता, फॉर एग्जांपल इट टर्न्स आउट टू बी 7.5 लेट्स से, तो 7.5th वैल्यू तो कोई नहीं होगी आपकी। आप क्या करोगे, 7th और 8th वैल्यू की एवरेज ले लोगे, दैट्स गोइंग टू गिव यू द मीडियन। ओके, अच्छा, हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हुए जस्ट रिमेंबर दे हैव, यू कांट हैव गैप्स बिटवीन बार्स। वर्टिकल एक्सिस के ऊपर हमेशा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती है हिस्टोग्राम्स के अंदर, कीप दैट इन माइंड। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज गिवन बाय क्लास विड्थ ओवर फ्रीक्वेंसी। क्लास विड्थ क्या होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यू हैव टू नो अबाउट दिस। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जब आपके पास होगी, उसमें लोअर क्वार्टाइल, मीडियन, अपर क्वार्टाइल, ये कैसे फाइंड करते हैं, यू गॉट टू नो अबाउट देम। लोअर क्वार्टाइल 25th परसेंटाइल होता है, मीडियन इज 50th परसेंटाइल, अपर क्वार्टाइल इज 75th परसेंटाइल। इनके फॉर्मूलाज आप यूज कर सकते हैं इस फॉर्म के अंदर, या फिर इस फॉर्म के अंदर वर्टिकल एक्सिस पे आप देखेंगे ये वाली वैल्यूज जाके, और फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर जो कॉरेस्पॉन्डिंग रिजल्ट्स आते हैं वो आप वहाँ पे लिख दिया करेंगे। इंटर क्वार्टाइल रेंज इज अपर क्वार्टाइल माइनस द लोअर क्वार्टाइल। रिमेंबर, इट्स नॉट 75 माइनस 25, ये नहीं करना। 75th वैल्यू जो आ रही होगी उसमें से माइनस करेंगे 25th वैल्यू ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, कीप दैट इन माइंड।
Probability में you've got number of favorable outcomes. जो भी आपकी condition को satisfy करी है, divided with the total number of possible outcomes. Probability हमेशा 0 और 1 के दरम्यान में होती है. जब आप tree diagrams बनाते हैं, which are often helpful to understand probability questions, तो उसमें क्या होगा? जब आपने calculations करनी है, horizontally along the branches, you will be multiplying probabilities. और अगर आपके पास multiple cases बन रहे हैं, तो vertically जो आपके पास cases होंगे, उनको आप add कर रहे होगे because there's an or between them. Horizontally and आ रहा होता है, vertically और आ रहा होता है दरम्यान में, तो उनमें आप add करते हैं. Okay, so that was a quick summary of a lot of these formulas that are going to be helpful for you tomorrow, inshallah, for your exam. I hope this was helpful. I wish you all the best for your exam, and I'll see you later at some point during A-levels as well, inshallah. You'll find a lot of helpful material on my channel. I mainly teach A-levels actually. So that's why most of the content that I have on the channel right now is on A-levels, but I'll be adding more content in the coming months as well. All right, I wish you all the best again. Allah Hafiz.